गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है अपने गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। इसमें 5 टन डमी क्रू कैप्सूल को रिलीज़ किया गया एक चिनूक हेलीकॉप्टर से, ताकि उसके पैराशूट बेस्ड डीसेलरेशन सिस्टम को सेफ स्प्लैश डाउन के लिए टेस्ट किया जा सके। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी था? ये देखने के लिए ज़रूरी था ताकि क्या एस्ट्रोनॉट सर्वाइवल का जो इनका प्रोग्राम है वो री एंट्री और लैंडिंग पर सही से वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सिमुलेट करता है फाइनल फेज ऑफ स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू अर्थ, और उसको फिर हम एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके इसमें चेक किया जाता है। तो इंजीनियर्स को इससे अलाउ किया जाता है कि वो इवेल्युएट कर सकें क्रिटिकल सिस्टम्स को, जैसे पैराशूट डिप्लॉयमेंट इन अबोर्ट सिनारियोज। लेकिन ये फुली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है एक्चुअल री एंट्री कंडीशंस को, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स एक पर्टिकुलर अल्टीट्यूड से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इसरो ने सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल टेस्ट भी किए हैं, ताकि क्रू एस्केप सिस्टम को वैलिडेट किया जा सके और परफॉर्मेंस अंडर रियल एंट्री कंडीशंस को भी वैलिडेट किया जा सके। तो पर्पज़ क्या था इसका? पर्पज़ ये था कि कंडक्ट किया जाए और या इवेल्युएट किया जाए पैराशूट बेस्ड डिक्सेलरेशन सिस्टम को। और इस टेस्ट में एक अनक्रूड कैप्सूल को ड्रॉप किया गया हेलीकॉप्टर से अबाउट 3 किलोमीटर लेट ऑल्टीट्यूड, और ये प्रोसेस ने स्टिमुलेट किया फाइनल स्टेजेस ऑफ अ रियल मिशन। तो 4.8 टन का डमी क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम 3 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड यूजिंग अ चिनूक हेलीकॉप्टर, और जैसे ही रिलीज़ हुआ तो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स ऑटोनॉमसली ट्रिगर हुए और उससे डिसेलरेशन हुई, डिप्लॉय किया गए 10 पैराशूट्स, और इससे जो है मॉड्यूल स्लो हुआ और एक सेफ स्प्लैश डाउन स्पीड ऑफ अबाउट 8 मीटर पर सेकेंड पर जो है वो पहुंच पाया। ठीक है, अदरवाइज अब आप सोचो तो पैराशूट जो है रियल री एंट्री मिशन में लगभग 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर जो है वो री एंट्री करते हैं। तो गगनयान मिशन जो है आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का मिशन है। 2027 तक ये प्लान किया गया है कि इसको भेजा जाएगा। फर्स्ट अनक्रूड मिशन है गगनयान 1, और फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025 में इसको प्लान किया जा रहा है जो अनक्रूड डिमॉन्स्ट्रेशन को के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। तो जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, प्रोपल्शन सिस्टम्स भी टेस्ट हो चुके हैं, LVM-3 रॉकेट भी जो है फुली ह्यूमन रेटेड है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मॉडल को भी बिल्ड कर लिया गया है। तो ये जो गगनयान मिशन है फर्स्ट स्टेप है इंडिया के ब्रॉडर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रोड मैप का, और ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 बनाने का भी एम्बिशियस टारगेट में से एक है। और इंडिया 2040 तक लूनर लैंडिंग का भी जो है वो क्रूड लूनर लैंडिंग का भी मिशन रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 16 टीचर्स को सिलेक्ट किया है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से कि उन्हें नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स दिया जाएगा 2024 का। तो ये जो नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स हैं 1958 में इंस्टीट्यूट किया गया था रिमार्केबल टीचर्स और हेड मास्टर्स को फेलिसिटेट करने के लिए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया है ऑनर और सेलिब्रेट करने के लिए यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन द कंट्री। ये अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट द्वारा 5 सितंबर को, मतलब टीचर्स डे पर हर साल। तो इसमें स्कूल टीचर्स और हेड्स ऑफ स्कूल्स जो हैं जो कि रिकग्नाइज प्राइमरी, मिडिल या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नॉर्मली रिटायर्ड टीचर्स को नहीं दिया जाता है अवार्ड, लेकिन जो टीचर्स उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में रिटायर हुए हैं उन्हें कंसिडर किया जा सकता है अगर वो बाकी के कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर GST। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने वेलकम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल को 2 टियर GST रेट स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन क्रिटिकल इश्यूज उन्होंने कहा है कि जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उसको भी एड्रेस करना चाहिए। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? तो जब आपके GST रेट जो है इनपुट के ऊपर ज़्यादा हो और टैक्स रेट जो आउटपुट है पर है वो कम हो, उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब जैसे अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझो, तो जो कॉटन पर या रॉ मटेरियल पर जो या इनपुट पर जो GST है वो 12 से 18% है, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं टेक्सटाइल्स उन पर 5% है। तो कम जो जो
मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रॉ मटेरियल पर ज़्यादा जीएसटी पे कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट बनता है उस पर कम जीएसटी पे करना होता है, तो उनका जो ये ऑफसेट करनी होती है इनपुट टैक्सेस को, उनके पास कम ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है उस पर तो कम जीएसटी लग रहा है ना। लेकिन वो जो अभी क्या होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट लिया, जो आपने कोई जो आप प्रोडक्ट बनाते हो फिनिश प्रोडक्ट, आपके जो इनपुट टैक्स उस पे जो आपने इनपुट पे जो जीएसटी दिया जाता है वो आप उसको क्रेडिट आपको क्रेडिट की फॉर्म में मिल जाता है, ताकि आपको फिर जो है दोबारा से फिनिश प्रोडक्ट पर जो है वो पे ना करना पड़े। लेकिन वो सिनेरियो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सिनेरियो है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर ही जब कम जीएसटी है और आपके जो इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हो उस पर ज़्यादा जो है जीएसटी है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हम इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ईयर आफ्टर ईयर आप जो है वो उसको आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए जीएसटी अलाउ करता है कि रिफंड या रिवर्सल ऑफ जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, ठीक है। और लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये रिफंड नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है टैक्स एक्सपर्ट्स के हिसाब से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक 2 डे वर्कशॉप की है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट चाहती है 2967 विलेजेस का 46 ब्लॉक्स में 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नदर्न बॉर्डर स्टेट्स में, ताकि लोगों को इनक्रेज किया जाए कि वो अपनी नेटिव लोकेशंस पर ही बॉर्डर एरियाज़ में रहें और आउट माइग्रेशन को रिवर्स कर सकें हम। ये प्रोग्राम जो है फंड्स देता है डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो लाइवलीहुड जनरेशन जो है वो प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म, कल्चरल हेरिटेज, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए के थ्रू की जा सकती है, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी दी जाती है इसमें। अब इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि इसका कोई बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ओवरलैप ना हो। अब जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 है, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कैबिनेट ने अप्रूव की थी 2025 में अप्रैल में। और ये प्रोग्राम जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट चाहता है उन विलेजेस में इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर से डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, इवन पंजाब, राजस्थान, ठीक है। इन एरियाज़ में ये कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुपर गरुड़ शील्ड 2025। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया और यूएस ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपनी एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शील्ड 2025। ये एक लार्ज स्केल मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओरिजिनली एस्टैब्लिश की गई थी 2006 में एज अ बायलैटरल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग एक्सचेंज बिटवीन यूएस एंड इंडोनेशिया अंडर द नेम गरुड़ शील्ड। और ये एक्सरसाइज को एक्सपैंड किया गया 2022 में, जिसमें कि एडिशनल पार्टनर नेशंस को भी इंक्लूड किया गया। ये एक्सरसाइज हर साल की जाती है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। और इसमें सुपर टाइटल इसलिए डाला गया क्योंकि बाकी के नेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जर्विंग नेशंस में कंबोडिया, इंडिया, पपुआ न्यू गिनी भी आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटो मेकर्स जो हैं वो सर्टेन नॉन एसेंशियल इक्विपमेंट को अपनी व्हीकल्स में कट कर रहे हैं ताकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज़ नहीं करना पड़े उन्हें। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या हैं? टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो अलॉयज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं। तो अपनी एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी परफॉर्मेंस, सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो ये मैग्नेट्स जो हैं वाइडली रिकग्नाइज होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ड्यू टू देयर एबिलिटी टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स इन कॉम्पैक्ट साइजेस। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो करंटली डोमिनेटेड है बाय चाइना। तो नियोडीमियम और सेमेरियम कोबाल्ट ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट मटेरियल्स हैं। तो ये मैग्नेट्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, वल्नरेबल टू कोरोजन होते हैं, इसलिए इनको निकल प्लेटिंग की जाती है ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। तो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इक्विपमेंट में इनकी जो यूज़ है, ये एविएशन, नेशनल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर गुड्स, ज्वेलरी, हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इन सब में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ताकि कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग रिजीम जो है वो इनेबल हो सके।
तो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 डिफाइन करता है कि कैसे एमिशंस ट्रेडिंग रिजीम जो है वो वर्क करेगी। उसके लिए जो एक एनडीए है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इस आर्टिकल के अंडर। अब इस एनडीए के अंदर एक 21 मेंबर कमेटी होगी, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसको हेड करेंगे। ये एनडीए ही जो है रिकमेंड करेगी यूनियन गवर्नमेंट को एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको कि कंसिडर किया जा सकता है ट्रेडिंग ऑफ एमिशन रिडक्शन यूनिट्स के लिए। मॉडिफाई किया जाएगा इसे टाइम टू टाइम, ठीक है, नेशनल सस्टेनेबल गोल्स के हिसाब से। फिर रिसीव करेगी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ इवैल्यूएशन, अप्रूवल और ऑथराइजेशन के लिए। ऑथराइज करेगी यूज़ ऑफ एमिशन रिडक्शन यूनिट्स आल्सो फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, जो कि फिर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। सो now let us see all these topics in English. So the first topic is airdrop test for Gaganyaan. This topic is important for your science and tech section. ISRO has successfully conducted its first integrated airdrop test, which is marking a key step towards the Gaganyaan human spaceflight mission. So a 5-ton dummy crew capsule was released from a helicopter to evaluate its parachute-based deceleration system for space safe splashdown. This test has validated the critical safety mechanisms needed to ensure astronaut survival during re-entry and landing. So, what is integrated airdrop test? It simulates the final phase of a spacecraft's return to Earth by dropping it from an aircraft or helicopter. This allows engineers to evaluate critical systems like parachute deployment in abort scenarios, performance during partial parachute failure, and crew module safety during splashdown. However, it cannot fully replicate actual re entry conditions since helicopters cannot reach sufficient altitudes. To address this issue, ISRO conducts suborbital or orbital tests to validate the crew escape system and performance under real and re-entry conditions. So, this test, integrated airdrop test, was conducted to evaluate the parachute-based deceleration system. And in this test, an uncrewed capsule was dropped from a helicopter at about 3 kilometer altitude. And this process has simulated the final stages of a real mission also, where the capsule is slowed first by atmospheric drag and heat shields, then by drag parachutes, and finally by 3 large main parachutes. So, a 4.8-ton dummy crew module was dropped from 3 kilometer altitude using a Chinook helicopter. Once released, the onboard avionics autonomously triggered deceleration and deployed 10 parachutes, which slowed down the module to a safe splashdown speed of about 8 meters per second. For comparison, parachutes in real re-entry missions typically deploy at about 150 meters per second. So this Gaganyaan mission aims to send Indian astronauts to low Earth orbit by 2027, and the first uncrewed mission, Gaganyaan 1, is planned for fourth quarter of 2025. This will test technology preparedness also, using unpressurized crew module without environment control and life support systems. So crew module and service module structures have been already manufactured. Propulsion systems have already been tested. LVM-3 rocket has also been fully human rated. A life support system model has also been built. So now Gaganyaan mission is only the first step in India's broader human space flight roadmap. The other ambitious targets include Bharatiya Antariksh Station by 2035 and India's crewed lunar landing mission by 2040. So the next topic is national awards to teachers. This topic is important for your governance section. So Department of Higher Education has selected 16 teachers in higher educational institutions and Polytechnic for National Awards to Teachers 2024. So this award was first instituted in the year 1958 to felicitate remarkable teachers and headmasters in their quest to improve the quality of school education. This award program is designed to honor and celebrate their unique contribution of some of the finest teachers in the country. These awards are given by President or Vice President of India on 5th of September, that is Teachers' Day, every year. So, school teachers and heads of schools working in recognized primary, middle, high, or higher secondary schools are eligible for this award. Normally, retired teachers are not eligible, but those teachers who have served as part of the calendar year may be considered if they fulfill all other conditions. So the next topic is inverted duty structure under GST. This topic is important for your economy section. Tax experts have broadly welcomed the centre's proposal for a two-tier GST rate structure,
but they have cautioned that critical issues like inverted duty structure need to be addressed. Okay, so inverted duty structure under GST occurs. Inverted duty structure in GST occurs when the tax rate on inputs exceed the tax rate on output. So you know that uh, if you are in a manufacturing and you pay GST for the purchase of inputs, then when you manufacture a particular finished product and there is a GST on that particular product, you get the input tax credit for the purchases that you have made on the inputs, and you have paid the GST for that. So you can utilize that input tax credit while making the payments for your finished products GST. But what happens in certain industries, like in the textile industry, the input tax ranges from 12 to 18%, but the finished products are taxed at 5%. So they would continue to accumulate the input tax credit for indefinite period because their industry is designed that their finished product is at lower tax, and their input products or input products are taxed at higher percentage. So the sellers have fewer options for offsetting the cost of input taxes, which results in accumulation of input tax credit, and it cannot be used for the output tax liability because the output would always be lower than the input tax that they have. This results in higher tax costs for businesses, and these input tax credits continue to get carried over to the next financial year, and until, of course, it can be utilized for the payment of output tax. But GST allows for a refund or reversal of this ITC to solve this issue. But there are certain exceptions where this input tax credit cannot be claimed, and this is the problem where the tax experts are saying that it needs to be addressed. So the next topic is Vibrant Villages program. This topic is important for your governance section. Union Home Minister has inaugurated a 2-day workshop on Vibrant Villages program. Vibrant Villages program is a centrally sponsored scheme implemented over the financial years 2022, 2023 to 2025-26. So it is aimed at comprehensive development of 2,900 plus villages in 46 blocks in 19 districts abutting the northern borders in the states of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, and UT of Ladakh. This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reverse the outmigration from these villages. This program will provide funds for the development of essential infrastructure and the creation of livelihood opportunities. So, the livelihood generation through promotion of tourism and cultural heritage, skill development, entrepreneurship, development of cooperative societies is envisaged under this program. So, interventions also include providing road connectivity to unconnected villages, housing and village infrastructures, energy including renewable energy, television, and telecom. But it is ensured that there is no overlap with the border area development program. Then we have this Vibrant Villages Program 2 also, which is also a central sector scheme approved by the Union Cabinet during April 2025, which aims to comprehensively develop the villages located in the blocks abutting international land borders other than the northern borders, which have already been covered in the Vibrant Villages Program 1. Okay. So the next topic is Super Garud Shield 2025. This topic is important for your security section. So Indonesia and US have recently launched the annual joint military exercise Super Garud Shield 2025. So this is a large-scale multinational joint military exercise designed to enhance interoperability, build mutual trust, and strengthen collective readiness. It was originally established in 2006 as a bilateral information and training exchange between Indonesia and US under the name Garud Shield, but this exercise was expanded in 2022 to include other additional partner nations. That's why Super was added to this title. Okay, this exercise has been held annually in Jakarta, Indonesia. This year's participating nations include Australia, Brazil, Canada, France, Germany, etc. And observing nations include Cambodia, India, and Papua New Guinea. So the next topic is rare earth magnet. This topic is important for your environment and science and tech section. Automakers are cutting down on certain non-essential equipment in their vehicles to reduce the usage of rare earth magnets. What are rare earth magnets? They are type of permanent magnet made from alloys of rare earth elements.
They are known for their exceptional magnetic strength, high energy density, and superior performance compared to other types of magnets. They are widely used in various industries due to their ability to generate strong magnetic fields in compact sizes. The global supply chain is currently dominated by China, which accounts for about 90% of processing capacity. So, neodymium and samarium cobalt are two of the most common types of rare earth magnetic materials. Both types are extremely strong. These magnets tend to be brittle and they are vulnerable to corrosion. Manufacturers typically nickel plate the material to protect it from oxidation. Rare earth magnets are used in medical applications, and they're also utilized in aviation, national defense, electronic devices, smartphones, consumer goods, jewelry, hard drives, and electric vehicles, to name several applications. So the next topic is carbon emissions trading. This topic is important for your environment section. Ministry of Environment has recently announced a National Designated Authority (NDA), which is a mandatory requirement under the provisions of Paris Agreement to enable a carbon emissions trading regime. So within the Paris Agreement, a section called Article 6 defines the contours under which such an emissions trading regime or a market can take shape. So the creation of NDA is a mandatory requirement under Article 6. NDA will be a 21 member committee headed by the Secretary of Environment Ministry. The NDA will recommend to the government a list of activities which can be considered for trading the emissions reduction unit from projects under Article 6. This will modify this list from time to time in line with national sustainable goals. Uh, NDA will receive projects or activities for evaluation, approval, and authorization, and it will also authorize the use of emission reduction units from the projects for use towards achievement of nationally determined contributions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.